As we continue with the final set of discussions for today, We now move towards a session that broadens our perspective to the global stage. this session is hosted by the Cluster of IR and Economics. The theme of today's discussion is the future of global political and economic order. We now invite our respected moderator and panelists to kindly take their places on stage. We are honored to have this session moderated by Dr. Fiza Batul, Assistant Professor, Department of Social Sciences, Zebis University. joining her is a distinguished panel of experts. Dr. Kaisar Bengali, renowned economics and policy analyst. Dr. Huma Bakai, Rector, Millennium Institute of Technology and Entrepreneurship, Karachi. Dr. Shaista Tabassum, Professor and former Dean, University of Karachi. Dr. Farhan Hanif Siddiqui, Professor SSLA, SESS, IBA University, Karachi. And Dr. Tausif Ahmed Khan, former Chairperson, Department of Mass Communication, FAST, Karachi. We look forward to an engaging and insightful discussion. A very warm welcome to all of you, and thank you for being here. We have assembled a very distinguished panel to discuss something that's, I think, it's the talk of the town, the change in the liberal international order and how it's affecting the global economy, global politics, media landscape, and Pakistan's position, strategic position in this changing landscape. So we have with us Dr. Kaisar Bengali, starting from there. He's one of the most prestigious, most respected voices on global economy in Pakistan. We were in the last session, we were discussing about BISP, who he was the person who, but BISP is the brainchild of Dr. Kaisar, but he is involved in policy analysis. He's a teacher and academic. Also, we have with us Professor Dr. Tausif. Dr. Tausif पिछले 22 साल से शोबा mass communication से मुंसलिक हैं. For 7 years, he was the head of the department, and he's someone who understands not just the bookish knowledge, the knowledge we have in books, theories, which is very much important of media framing and how media is operating, but he's also someone who is actively involved in the human rights politics in Pakistan. So he understands the dynamics of the real politics. Then we have Dr. Huma Bakai. She needs no introduction. She is currently the rector of MITE. Okay. And she has been someone who's been to in media. Sorry. So she is someone who is a renowned voice on international affairs and foreign policy, and she has made appearances in media, but she's also an academic, and we have been hearing her in different panels. And welcome here, ma'am. And Dr. Farhan Hanif Siddiqui, for me, the most important introduction is that I was very lucky to have some very good teachers, and he was one of them. At present, he is teaching at IBA, but he is also associated with Quaid-e-Azam University. He was the head of the department there. And I'm very honored to have you all here. And I'm looking forward to a very meaningful discussion. So let's start with something which is in the minds of almost everyone here, the liberal international order, because that's what's the theme, the future of global political and economic order. And when I was planning this session, I was thinking that the liberal international order is in decline. That was the premise. But then I realized that I need to step back and then listen to you. Do you really believe that the post-Cold War world order was really liberal? And if not, how do you see the current moment? So I want this is directed to all of you. So one by one, if you can give
response. Okay, Ji. Thank you so much. The liberal order, it depends on how you define what a liberal order is. So, if you define the liberal order in terms of how the global capitalist economy becomes more extractive, the way that it perpetuates its hegemony, that's not going away. So, that's being reinforced. Uh, Previously, it was oil. Now we have a race for critical minerals. Um, the China, which is, everyone touts as the rising power, contending with American supremacy, is firmly embedded in the liberal capitalist order. So you do not have an alternative to the liberal capitalist order globally, in the sense that we can argue that the system itself is transforming from a liberal, let's say, to a socialist order. So the perpetuation of the liberal order in terms of its political economy function, I think that continues and will continue. It will only be reinforced and it will become more and more extractive and will bleed more inequality globally. What's changing is that norms, for example, related to human rights, related to legal questions, how states relate with each other, those are becoming weaker. And the reason why they are, it's not because the states at large are opposed to such norms, because the leader of those norms, the United States, is now questioning whether these legal norms actually have a role that incentivizes the kind of politics that they do. So the fact that President Trump has attacked these multilateral institutions, he's pulled the U.S. out of the Paris Treaty. So the environmental regime is in a crisis. The health regime is in a crisis. So that tells you that those norms are becoming weaker. Not again because there's a global consensus among all states that it should be weaker. I don't think that's the case. I don't think the Europeans are fairly invested in this idea that these norms should be weaker. But the US, which was perpetuating these norms, it now under this administration thinks that norms do not matter. But I think they do. A third way in which this liberal order is changing, quite astonishingly, is with respect to power configuration. So I think the unipolarity or America's unipolar moment that was announced in the 1990s, I think that's in a serious crisis now. Meaning a lot of people say that it has to do with the rising China, that there are these rising middle powers. The US is still the, unipolar superpower in the world right now. So it's the only country which has 800 military bases across the world. It's the only country which can attack any other country in the world from any strategic point that it wants to. Chinese don't have the power to do so. The Russians do not have the power to do so. When the Chinese develop that capacity or capability, that is when we'll argue that China is now a superpower. So the definition of a superpower means, it implies that a great power has the ability to wage wars in any part of the world, whether it be Afghanistan, Iran, Iraq, whatever. What has happened and what has changed is that the credibility which surrounds American power, I think that's now contested. So the failure to achieve military objectives in Afghanistan, the failure to achieve military and political objectives in Iraq, the fact that now we have a frozen conflict with respect to Iran, the fact that the Americans were not really able to, open up the Strait of Hormuz, the fact that, they've not been able to gain some leverage over Iran's nuclear weapons program tells you that they can have their nuclear might, they can have their superpower capability, but utilizing this on other states in the sense of having them back down, I think the credibility surrounding American power, it's now contested. Thank you. Wow. Phrase the question again. You don't want me to repeat everything Farhana just said. Absolutely not. I mean, you see, what has happened is that the exposure of the hypocrisy is 360 degrees.
That is exactly what has happened. Israel did not become Israel overnight, and it didn't start doing what it did in Gaza overnight. It was happening over several years. And even more recently, मैं उर्दू में ये लफ्ज़ कहती हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा असर करेगा, कि एक मुजरमाना कातिलाना खामोशी थी जो कुछ इजराइल कर रहा था. ना यूनाइटेड नेशंस को सांस आती थी, ना ह्यूमन राइट्स वाली जर्मनी को सांस आती थी, ना फ्रांस और यूएस को सांस आती थी. When did all of this change? दो बातें. The first thing is that once the Cold War came to an end, we could not even title what we had. We said post-Cold War order. We never had a title for the new era that we had. And it was largely because the instability had an order. It had some kind of control. And more recently, that started to collapse. And what has perhaps collapsed more is how useless hard power is. And if you have a minimum deterrence, you can actually counter the hard power of a superpower. The difference between Gaza and Iran is that Iran could take the pain and inflict pain back. The asymmetry of power existed. The problem with Gaza was that it could not hit back. And Israel was used to opponents where suppression was symbolic. They took the trophy before they actually, they killed for fun. Now we have reports coming out of Gaza which said that they would use AI to identify a certain age bracket. And then one day it would be a game to kill them, to shoot at the neck, the other day at the thigh, the other day at the stomach, and so on and so forth. And one day would be called the disability day, and the other day would be called the half-kill day, and complete elimination. So to them, killing had become a game till a rude wake-up call was given by Iran. But do you really think Iran was able to do this on its own? Absolutely not. I think Iran was able to do it because Iran had consistent, quiet support from Russia. Iran had built for this for 25 years. And while doing that, it had built up a proxy network to keep the war away from its doorstep. But at the same time, it kept preparing for the war to reach its doorstep. I remember I was at a Manama dialogue 6 years ago. Of course, Iran was not invited. But everybody that was at the dialogue only wanted to talk about the Iranian proxies. And today, as I speak to you, I think what has really happened is that the security architecture of West Asia is changing. What happened yesterday with OPEC and Saudi Arabia separating is the beginning of the change. And I don't think it's just the security architecture. I think it's also the financial architecture that is changing. And it's not that US is declining, but I think others are rising. And also about this greed-driven capitalism. I know Kesser has a lot more to say on it than I do. But, once again, I was again at an American university 5-6 years ago, and I was introduced to this term which was called conscious capitalism. And I said, ye Zamir wala capitalism kya hai na? But they were also, coming awake to it. So, yes, China is also rooted in a capitalist growth paradigm, but they've done something else, and that is called the Beijing Consensus. Usko Beijing Consensus China ne nahi bola hai. Usko Beijing Consensus kisi ne Washington mein aake bola hai. Usne bola कि लोगों का इन्होंने तो Washington Consensus adopt कर लिया है. उसने कहा Washington Consensus नहीं है, ये इनका अपना consensus है, which is called the Beijing Consensus, which is essentially not abdicating everything to the market. China does not abdicate things to the market. It allows markets to grow, but at the same time keeps stringent control. So I think these are paradigm shifts that are taking place which will challenge the existing global system. What scares me is, as a student of international relations, that every time the world became multipolar, there was a global war.
from 30 years war in Europe to the First World War to the Second World War. And then we woke up to collective security and other such norms. Today, there is only one reality. You're a secure state if you can fend for yourself and you have nuclear weapons. So they mess with Iran, but they actually don't mess with Pakistan. And they don't mess with North Korea. So what does it end in? It is pushing Iran towards becoming at least a threshold nuclear state. What is Iran? What is this conversation or the freeze or the status quo or the Cold War that is happening between Iran and US? Hormuz is something they discovered on the way. But essentially, Iran, after agreeing to give up on enriched uranium in 2025, during the conversations in Geneva, they were into their technical discussions on it, in which they were reducing the levels of enriched uranium from 600 and something to 400. They were ready to take a moratorium of about 7 years. All of that was agreed upon. Iran was a compliant, accommodating Iran. And then you did what you did. So now what you have is a nation convinced of acquiring nuclear weapons for survival. Every nuclear expert that I speak to tells me that either Iran is already a threshold nuclear state or it is going to become one at any cost and every cost. That is the new reality. We've buried collective security, we've buried humanitarian law, we've buried human rights in the rubble of Gaza, and US made it happen. Thank you. जी डॉक्टर तौसीफ सेम क्वेश्चन आपसे. जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था तो कैसर साहब हम स्टूडेंट लीडर थे, तो उस ज़माने में हम लोग नारा लगाते थे अमेरिकन इम्पीरियलिज्म का, अमेरिकी साम्राज्य का. उस ज़माने में वियतनाम के बाद एक नई दुनिया डेवलप हो रही थी. ये जो पोस्ट कोल्ड वार एरा है और ये गज़ा का जो मामला है, इसमें फिर इम्पीरियलिज्म और ख़ास तौर पे ट्रम्प के आने के बाद एक नया किरदार इम्पीरियलिज्म का हमें सामने आता है. और वेनेजुएला में जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है जैसा कि 250 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र के साथ किया था. उस वक्त का जो साम्राज्य था उसकी शक्ल इतनी भयानक थी और अब भी यही. अच्छा, इसके साथ एक नई तब्दीली जो आई, जो मेरा सब्जेक्ट है मीडिया का, कि ऑब्जेक्टिविटी को बड़ा नुकसान पहुंचा. यूरोप अमेरिका का जो मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो इस बात पे बहुत फ़ख्र करता था कि वो 100% ऑब्जेक्टिविटी होती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा. बीबीसी का जो अरबी सेक्शन है उसके 6 सहाफ़ियों को निकाल दिया गया, इसलिए कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी खबरों को रोका गया गज़ा में जहाँ पे इसराइलियों ने मारा मासूम बच्चों को, कि वो उसको टेलीकास्ट करना चाहते थे, मगर उन्हें कहा गया कि ये नहीं हो. यही सूरत हाल बाकी मीडिया की हुई. तो वो जो एडवर्ड सईद ने कभी अपनी किताब में लिखा था कि मगरबी मीडिया जो है डिसइन्फॉर्म करता है, मिस इन्फॉर्म करता है, वो उस वक्त उसकी एक शक्ल थी, वो एक मुख्तलिफ पैराए में बात थी. तो वो अब दोबारा यानी इस पूरी जंग के दौरान ये सामने आने लगा. सिवाय अल जज़ीरा के, एक अल जज़ीरा वाहिद चैनल है जिसने बहुत हद तक ईरान को भी कवर किया और जिसने बहुत हद तक ऑब्जेक्टिवली जो है गज़ा को कवर किया. बाकी जितना मीडिया था उसमें वो जो बुनियादी बात थी जो कि हम पढ़ते हैं और पढ़ाई जाती, तमाम मगरबी दानिश्वर इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ख़बर वही होती है, जो न्यूज़ वही होती है, जो ऑब्जेक्टिव होती है, वो कहीं पीछे रह गई. तो ये, और उसके साथ फिर एक सोशल मीडिया का बहरान आया. उन्होंने सोशल मीडिया को भी किसी तरह रेगुलेट करने की कोशिश की. बहुत सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म थे वो बंद हुए. या ये कि ऐसा मैसेज जो इसराइल के ख़िलाफ़ जाता था, जो गज़ा के मामले में था, जो लबनान के मामले में था, उसको स्क्रीन से आउट कर दिया गया. तो ये एक नई सूरत हाल बनी. ये बिल्कुल ऐसी है जैसे वियतनाम के जंग के ज़माने में थी.
वियतनाम की जंग में भी जब तक स्टूडेंट्स ने तहरीक शुरू नहीं की थी फ्रांस में और उसके बाद अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में, तो उस वक्त भी ऐसे ही कवरेज होता था, ऐसे ही अमेरिकी फिल्में आती थी जिसमें वो 007 का जो किरदार था वो ऐसे ही था कि वो किस तरह वियतनामियों को कत्ल कर रहे हैं और एक गाड़ी के अंदर मारते जा रहे हैं, वही वाली सूरत हाल थी। तो वो उस वक्त भी उन्होंने वही किया था, और अब वो क्योंकि दौर तब्दील हो गया, जाहिर है वो इस तरह के हीरोज का कारनामा नहीं रहा, तो उन्होंने मिस इन्फॉर्म करके, डिस इन्फॉर्म करके खबरों को रोका। और उसके बावजूद एक पैरेलल मीडिया जरूर मौजूद रहा जिसने खबरें दी, जिसके नतीजे में अमेरिका में भी बड़े पैमाने पे कैंपेन चली, यूरोप में भी चली, और उसके असरात भी सामने आए। मगर मीडिया का जो रिवायती किरदार था वो इस पूरी सूरत हाल के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। हमारे मीडिया का तो खैर जिक्र क्या, वो तो है ही रियासत के दबाव के अंदर। इवन इंडिया का मीडिया, जो इसके बारे में बड़े फ़ख्र से कहा जाता था कि वो जो बुनियादी उसूल हैं मीडिया के, जो सहाफ़त के बुनियादी उसूल हैं, उस पर वो कायम है, वो यकतरफा तौर पे हो गया। एक बड़ा मीडिया जो मोदी के साथ था, उसने तो खुल के इसराइल की हिमायत की और वही सारी खबरें दी जो इसराइल के हवाले से जाती थी। तो ये एक नया बहरान है, इसमें कोई नई तब्दीली, नई टेक्नोलॉजी और नए मीडिया के हवाले से बात होनी चाहिए, ताकि वो मैसेज जो कि एक अमरीकी साम्राज्य या इम्पीरियलिज्म ने उसको किल करने की कोशिश की है, वो आवाम को पहुँचे और उसके नतीजे में दुनिया में कोई नई तब्दीली रूनुमा हो। जी शुक्रिया। इंट्रोडक्शन का भी शुक्रिया। सबसे अहम चीज़ आपने नहीं बताई, मैं ज़ाबिस के फैकल्टी में हूँ। ये और बात है कि कभी कभी हम colleagues हैं। गायब कर देता हूँ, लेकिन मैं आई एम पार्ट ऑफ ज़ाबिस। जी आई वुड अग्री विथ एवरीथिंग दैट इज सेड। ये सही है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड नॉट जस्ट मिलिटरीली, इकोनॉमिक्स, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी कोई मुल्क मैच नहीं कर सकता। द बेस्ट एक्टर्स, द बेस्ट म्यूजिशियंस दे प्रोड्यूस, और किसी और मुल्क के कोई अच्छे होते हैं तो अमेरिका जाके ही शाइन करते हैं, वो अपने मुल्क में नहीं करते। सो दैट इज़ देयर एंड इट्स नॉट गोइंग अवे परहैप्स फॉर द नेक्स्ट 30 years, वन जनरेशन। बाद में देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये भी सही है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक मोनोपोली थी वो टूट चुकी है। वो सिर्फ क्रेडिबिलिटी के हवाले से नहीं टूटी है, इकोनॉमिक्स में भी टूट चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो इकोनॉमिक पावर है इस वक्त, वो उनकी डेफिसिट फाइनेंसिंग से है, डेफिसिट से है। वो जिस तरह के उनके इवन डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स हैं वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते, which means the quality of life will go down. It's already, poverty is rising in the United States, inequality is rising. और ये जो स्टैंडर्ड है वहाँ का, ये मेंटेन नहीं कर सकते। The reason I think Trump has shut down US aid and is against foreign aid is because they know they can't afford it. उनके पास पैसे नहीं है। तो और ये जो पैसे WHO और इनके जो काट रहे हैं, उसके पीछे यही है कि वी डोंट हैव मनी, व्हाई शुड वी बी फंडिंग अदर ऑर्गेनाइजेशंस। जो लिबरल ऑर्डर का भी आई थिंक आई अग्री विद हुमा, और आई थिंक जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उसने जो तकरीर की थी डावोस में, वो मेरा ख्याल है सबको पढ़नी चाहिए। वो बेसिकली एन एडमिशन ऑफ गिल्ट है कि हमने क्या किया है दुनिया के साथ। वो उन्होंने जो एग्जांपल दिया, उसने कहा कि जी ये जो रूल्स हम बनाए हमारे फ़ायदे के थे तो हम इन्फोर्स करते रहे, और ये कहते रहे कि इंटरनेशनल ऑर्डर है, रूल बेस्ड ऑर्डर है। जब यही रूल हमें सर्व नहीं करते थे तो हम वायलेट करना शुरू कर दिया। इट्स जस्ट लाइक WTO जब बना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स जब बने हैं, तो कैपिटल को फ्री मूवमेंट मिली है। कैपिटल कैन मूव, सरमाया मूव कर सकता है, लेबर मूव नहीं कर सकता। ये उन्होंने बनाया। अच्छा, उस वक्त वेस्ट सरमायादार था। अब चाइनीज़ मल्टीनेशनल्स आ गए हैं
تو ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم نے رول بنایا ہے اس میں تو چائنا کر رہا ہے. بیکاز وین باسٹن ایئرپورٹ کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی, دا چائنیز بیسٹ بڈ, لیکن انہوں نے کہا باسٹن ایئرپورٹ چائنا کو تو نہیں دے سکتے ہم. تو وہ WTO began to crack. It is actually cracked now because یہ جو پورا جو ٹیرف وار US نے کیا ہے وہ تو WTO کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے WTO تو ختم ہو گیا. ٹرمپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, آئی ڈونٹ ریکگنائز اینی انٹرنیشنل لا. بیسیکلی پورا انٹرنیشنل لا کا ایڈیفائز ہی انہوں نے توڑ دیا, اور توڑا جس طرح مڈورو کو انہوں نے اٹھایا اور لے گئے, اور ملکوں میں جس طرح سے وہ کرتے ہیں. اور آئی تھنک ہما نے بالکل صحیح کہا, جو اسرائیل کرتا رہا ہے پچھلے 50 سال سے, وہ نہ صرف یورپ اور جرمنی اور امریکہ اور میڈیا سائلنٹ ہے, ساری عرب ملک بھی سائلنٹ ہے. دے آر آل کمپلسٹ ان دی مرڈر آف پیلسٹینین مین, ویمن اینڈ چلڈرن. اور آج بھی کل جو انہوں نے ریزولوشن پاس کیا ہے گلف اسٹیٹس نے, دے کنڈیمڈ ایران فار اٹیکنگ دیم, بٹ دے ہیونٹ کنڈیمڈ اسرائیل اینڈ امیریکا فار اٹیکنگ ایران. مطلب یہ ہپوکریسی کی انتہا ہے. بٹ مجھے جو خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ اب نارم بن جائے گا. جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت سے اپنی بات منوائے گا, اور وہ مورل ہے, امورل ہے, صحیح ہے, غلط ہے, none of it will matter. اور وہ کھل کے کہیں گے کہ بس جی ہمارے پاس طاقت تھی ہم نے کر دیا, جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. سو آئی تھنک دا ورلڈ ہیز چینج, دا ورلڈ ہیز بیکم lawless, اینڈ دوز کنٹریز دیٹ آر ویک ول suffer unless they create some strength. اور I think جو asymmetric war کا بڑا کمال ہے, آپ کمزور ہے لیکن آپ پھر بھی پاورفل ملک کو, طاقت کو آپ ہٹ کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں. اور چائنا نے کر دیا. یسٹرڈے the German Prime Minister made a remarkable statement. He said Iran has humiliated the United States. No, it has. But Trump تو بالکل اچھل رہا ہے اس بات پہ, کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے تم نے کہہ دیا, ہمیں کون ہیوملیٹ کر سکتا ہے, ہم امریکہ ہے. لیکن صحیح ہے, it has been humiliated. I mean, America has lost wars. It lost in Vietnam, it lost in Afghanistan, it lost in Iraq. مطلب ڈیسائسو ڈیفیٹس تھی. ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیفینیشن کی بات ہے کہ ہارے یا نہیں ہارے, ڈیسائسو ڈیفیٹ تھی. اور یہی ڈیفیٹ ان کو ملٹری ٹرمز میں تو نہیں, لیکن اسٹریٹجیکلی یونائٹیڈ اسٹیٹس از آلریڈی ڈیفیٹڈ, بیکاز دے کانٹ اوور تھرو دا ایرانین رجیم, دے کانٹ اوپن دا ہارمز. اور جو انہوں نے اپنا بلاکیڈ لگایا ہے دیٹ, وہ تو اپنے پیروں پہ گولی مارنے کے برابر ہے, بیکاز انہوں نے تو جو آئل پرائسز کو مزید بڑھنے پہ کر دیا. آج $111 ہو گیا. تو آئی تھنک دی جو انٹرنیشنل آرڈر تھا جس کو لبرل آرڈر کہتے تھے, وہ سرٹنلی ٹوٹ گیا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس پہلے لپ سروس دیتا تھا لوگوں ملکوں میں ہیومن رائٹس کی رپورٹ کہ آپ کے یہاں وائلیٹ ہو رہا ہے. ظاہر ہے وہ جو ان کے اپنے خاص ملک تھے ان کی وائلیشن تو ان کو نظر نہیں آتی تھی, باقیوں کی آتی تھی. اب وہ کسی کی بھی نظر نہیں آئے گی, اور ان کے اپنے ملک میں بھی وائلیٹ ہوں گے ہیومن رائٹس, اور ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک the world has become dangerous for countries, and it's dangerous for us individually also. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر انہوں نے جو 26-27 امینڈمنٹ آیا ہے, 3 یا 4 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بات نہیں مانتے تھے فیلڈ مارشل کی, وہ ان کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو کورٹ سے فارغ ہے. اب یہ اس قسم کی چیزیں آئی ہیں, اور ہوگی, اور ریپریشن بڑھے گا. کویسچن از ہم کتنا اسے فائٹ کر سکتے ہیں, کتنا ریزسٹ کر سکتے ہیں, ہمارے اوپر ہے. اپنے اسٹوڈنٹ کی بات کی, ہم جب اسٹوڈنٹس تھے تو ہم ہر بات پہ پروٹیسٹ کرتے تھے. ویٹنام پہ بھی پروٹیسٹ کرتے تھے, حالانکہ ویٹنام سے ہمارا تعلق کوئی نہیں تھا. وہ اس زمانے میں ریگل سنیما ان صدر واز دا سینٹر آف دا سٹی 1970s میں. وہاں کھڑے رہ کے ہم پیمفلیٹ بانٹا کرتے تھے.
آج جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی چیز پہ پروٹیسٹ نہیں کرتے, جبکہ all you have to do is click a button on your mouse and you can collect maybe 1 million signatures protesting what's happening in the country, but you don't do it. And I think that's what you should do if you want to have a society that is livable and holds to your ideals. Thank you. Thank you, everyone. توصیف صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ ویسٹرن اور نان ویسٹرن میڈیا نے جس طرح سے پورے کنفلکٹ کو کور کیا اس میں بہت ڈفرینس تھا, لیکن سوشل میڈیا جس پہ ہم بڑے عرصے سے بات کر بھی رہے تھے کہ وہ وار نیریٹو چینج کر رہا ہے, اس میں ایک ریمارکیبل چینج میں نے اس کانفلکٹ میں نوٹ کیا. اس سے پہلے تک پاکستان انڈیا کے کانفلکٹ میں بھی میمز بنتی تھیں, اے آئی کا استعمال بھی ہو رہا تھا, بٹ پبلک پلیٹ فارم پہ ہو رہا تھا. For the first time, I noticed that official accounts were used for profane, the language Trump used was extremely profane. اور پھر کس طرح سے ایرانین ایمبیسی کے جو اکاؤنٹس تھے ان سے ٹرولنگ ہوئی, اس پہ اس کا رپلائی آیا. سو ہم نے ایک بالکل ڈفرینٹ, بیکاز ابھی تک یہ معاملہ پبلک لیول پہ تو تھا لیکن آفیشیل لیول پہ نہیں تھا. سو ہاؤ ڈو یو سی دس چینج؟ دیکھیے یہ بالکل نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی کہ سوشل میڈیا میں وہ بہت سارا میٹر آیا جو کہ روایتی میڈیا میں نہیں آ رہا تھا, اور اس سے خاصی لوگوں میں آگہی پیدا ہوئی. پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز میں جو مظاہرے ہوئے وہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئے, مگر کیونکہ ٹیکنالوجی کا کنٹرول تو ان کے پاس ہے تو انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی. بہت سارے اکاؤنٹ بند ہوئے, بہت سارے لوگوں کے واٹس ایپ جو ہے بند کر دیے گئے, فیس بک سے بہت سارا میٹر نکال دیا جاتا تھا. اس پہ کوئی اسٹڈی نہیں ہوئی, مگر خاصا میٹر جو تھا وہ ان سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے غائب کر دیا جاتا تھا. تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹیکنالوجی اتنی تیز ہے اور اتنی سستی ہے اور اتنی آسان ہے کہ اس میں بہت آسانی سے میسج چلا جاتا ہے, مگر اس کے باوجود اسے خاصی حد تک انہوں نے کوشش کی, کیونکہ جو لوگ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں, تو وہ فوری طور پہ تو اگر نہیں ہوا, مگر یہ کہ ممکن ہے کہ آگے چل کے وہ زیادہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں. مگر سوشل میڈیا کا ایک کردار ہے, مگر ایک پھر سوشل میڈیا کا کردار ایک دوسرا بھی ہے کہ اس میں جو بہت سارا جو میسج ہوتا ہے اس میں آبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ وہ جو لوگ اس میں اپنا میسج دیتے ہیں وہ حقیقت سے دور ہوتا ہے. اس پہ پھر مذہبی لوگوں کا بہت زیادہ جو میسیجز جو وہ آئے, انہوں نے یہ غزہ کی لڑائی کو مذہبی کلر دینے کی کوشش کی. یہ ہمارے ہاں سے ہوا, جو مذہبی جماعتوں نے اس کو استعمال کیا اور دوسرے ممالک سے بھی ہوا, تو اس سے وہ جو ان کی ایک اچھی اسٹرگل تھی اس کو نقصان پہنچا. یورپ امریکہ کے نوجوان اس لیے تھوڑی سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں مسلمان جو ہیں کوئی اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں, وہ تو انسانی حقوق کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں, وہ تو انسانیت کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں. تو جب سوشل میڈیا پہ اس طرح کا میٹر آئے گا جس کو کسی ایک خاص مذہب کی لڑائی قرار دی جائے گی اور اس کو اس کا کلر تبدیل کیا جائے گا, تو اس سے جو دنیا میں جو اکثریت ہے وہ دور ہو جائے گی. تو جہاں سوشل میڈیا نے ایک پازیٹیو کردار ادا کیا, وہاں اس طرح کا کردار بھی سامنے. Thank you. So, Dr. Kaisar, you were talking about Iran conflict. One important dimension of this conflict, apart from this role of media, is the pace at which economic fallout happened with the closure of the Strait of Hormuz. Do you think that the current international order is able to absorb this shock, and for how long? I think whether the world wants it or not, they will have to absorb it. I mean, یہ question کہ will they be able to absorb تو question نہیں ہے. Oil is a lifeline like blood in our body. When you shut it off, you shut off the lights and everything is shut down. اور جو آ رہا ہے میڈیا پہ جس قسم کی کنڈیشنز اب انڈیا, بنگلہ دیش, سودان اور ویتنام اور ملکوں میں ہے, لوگ کے پاس اگر انڈیا سے آ رہا ہے کہ بہت سارے ریسٹورنٹس بند ہو گئے اس لیے کہ
गैस नहीं है तो कैसे खाएंगे। उन रेस्टोरेंट्स में जो डेली वेज वर्कर्स काम करते थे वो बेरोज़गार हो गए। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स थे, अब वो मजबूर हो गए कि वापस गांव चले जाए अपने। गांव जाने के पैसे नहीं है तो पैदल जा रहे, 300-400 मील पैदल चल के जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी हमें गैस से थोड़ी प्रोटेक्शन है बिकॉज वी हैव आवर ओन गैस, To some extent. बट इट वोंट लास्ट। ठीक है, we import 27-28% ऑफ गैस फॉर आवर नीड्स, और गैस का क्राइसिस दुनिया में सबसे पहले आएगा तेल के बाद भी। तेल जो है वो थ्रू रेड सी अभी भी सप्लाई हो रहा है, गैस नहीं हो रहा है। गैस का मेजर जो सप्लायर है कतर है। कतर ने कह दिया है कि अब 5 साल तक हम गैस नहीं दे पाएंगे, हमारी डैमेज जो हुआ है। सो गैस विल बी अ प्रॉब्लम। विदाउट गैस फर्टिलाइजर इज़ अ प्रॉब्लम, विदाउट फर्टिलाइजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ अ प्रॉब्लम। So all that will rise. It's already rising. Prices are rising. Food prices are rising. Even in the US it is rising. हमारे यहाँ भी rise हो रहा है। लेकिन हमारा problem, I think this will be your last question, so let me not get into that. So the world's economy is disrupted, and even if the war ends tomorrow, Hormuz is open tomorrow, जो डिस्ट्रप्शन हुई है इसको ठीक होने में 2-3 साल लगेंगे, और इट विल नॉट रिवर्ट टू व्हाट इट वाज, देयर विल बी समथिंग न्यू। जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ये अल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स ढूंढेंगे, उसको बनाने में वक्त लगेगा। पाइपलाइंस अगर डालनी है, फॉर एग्जांपल यूएई का एक पोर्ट डायरेक्टली इंडियन ओशन में खुलता है बाई पासिंग हॉर्मस। वो वहाँ तक पाइपलाइन एक है, उसको एक और पाइपलाइन लगा सकते हैं, और इट कैन से ट्रांसमिट ऑल इट्स ऑयल थ्रू फुजैरा इज़ द पोर्ट विच इज़ आउटसाइड द हॉर्मस स्ट्रेट। सऊदी अरब अपना ईस्टर्न बोर्ड से करेगा। ऑल दैट विल टेक टाइम एंड इट इज़ गोइंग टू मेक ऑयल कॉस्टलियर, सो आई थिंक। अच्छा, जो गल्फ़ की इकोनॉमीज़ है उसका अभी कोई नहीं कह सकता कि जंग के बाद क्या होगा। अब तक तो एक उनका जो एक इमेज था कि एब्सोल्युटली सिक्योर फॉर इन्वेस्टमेंट्स, सिक्योर फॉर इंडिविजुअल्स, सिक्योर फॉर वेमेन, वो तो इमेज तो क्रैक हो गया है। वेदर फॉरेन इन्वेस्टर्स विल कम बैक इन द सेम वे और नॉट। जो लोग वहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे ब्लाइंडली, पाकिस्तानियों ने भी बहुत किया, अभी भी करेंगे। सो आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट बहुत एक और चीज़ है कि कंट्रीज विल ट्राई एंड रिड्यूस देयर ऑयल कंटेंट ऑफ देयर इकोनॉमी के, और जो दूसरे सोलर है, विंड पावर है, इसकी प्रमोशन होगी बहुत ज़्यादा across the world. This is one big positive change coming out of this. So do you see it as a blessing in the disguise? Great. Coming to you, Dr. Huma, because Pakistan is playing a very I'll important... just make a quick comment on what Dr. Kaisar said. You see, I think something far bigger is happening than oil supplies. What happened yesterday was a fracture in an artificial consensus that existed for 50 years between the Gulf states and Saudi Arabia. Why did that happen? Simply put, the Gulf states stepped out of the OPEC because they want to produce more oil. And this is Trump's, this is typical Trump way of addressing the oil supply issue. But what will it do? It will just fracture the West Asian consensus and become more problematic. So what scares me as a student of international relations is that I see a striking similarity between the way alliances were being made before the First World War. That is exactly how the alliance system is working now. So you have an assertive Russia and you have a quiet China,
and you have a global south emerging, and you just for a second go back to what was happening before this war started. There was a meeting that took place between the Indian Prime Minister and the Israeli Prime Minister. And what did it say? Which back then also, and I was like, what is happening? They said that by attacking Iran, we will get rid of the axis of resistance, which was Shiite. Right? The proxies are already taken care of. We take Iran out, the axis of resistance is over. After that, what do? Says then we look at the Sunni radical axis. What was the Sunni radical axis? And this is open. You can read about it anywhere. The Sunni radical axis is Saudi Arabia, Turkey, Egypt, and Pakistan. So you need to see the natural convergence happening between Modi and Netanyahu. Right now, Netanyahu is in deep trouble, yes. Modi is in deep trouble, yes. And Trump is also in trouble. So if this is, India is living with the Modi baggage, and US, this is the Trump moment, hopefully this will pass. If this will not pass, we are poised to have a third world war, and it will be fought on the seas. And you are already seeing the beginning. And this has been, international relations are very bad at predicting things. But this is one thing pundits of international relations have been saying, that the third world war will be on the sea lanes. And we already see the beginning of it. एक choke point बंद किया है ना, अभी मंदुल अरब बंद कर दे, वो Strait of Taiwan बंद कर दे, पूरी दुनिया रुक जाएगी. And somebody would want to then open them up forcefully. ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पास हुआ था ना यूएन में, जब गल्फ स्टेट्स ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फोर्सफुली खोल दें, जिसको वीटो कर दिया. तो एक दफा नहीं, 3 दफा जंग रुकी है सी लेन्स पर. सो दिस इज माय वरी. अब तुम अपना सवाल पूछ लो. आई जस्ट हैड टू से दिस. So all the hope that I got from there. I'm sorry. I don't want to dash hopes down, but I'm just saying that we're living in a very dangerous world, and there's a Chinese curse. The Chinese curse is, may you live in interesting times. We're living in interesting times. So I've taken my time. I'll let Farhan take it. So connected to what she was saying, is this war a symbol of a populist in power? And if that's the case, if a nationalist, right-wing nationalism is rising around the world, then where are we headed really? Yeah, the one thing that we know about populist leaders is they make very commonsensical, assumptions which have no deeper roots. It's not an ideology. But the paradox is the way that it resonates with the masses. And I think we need a separate, panel discussion or seminar on it. And the same goes with Trump. And the one thing that you see, ever since this war with Iran has started is that he makes very commonsensical assumptions which are truly ludicrous. So he really believes that once the Strait of Hormuz opens up, oil prices will go down automatically and everything will be fine, which economists have been saying that for oil prices in domestic markets to come down to the pre-war levels, it will take another year and a half. And I think, yes, so it will take 2 years or something, or even more. But he believes, that will happen. He really believed that once he wages a war on Iran, a regime change will occur, and then people will rise up, and the Iranian, regime will fall down, and that's where he, put a lot of, his thought and investment and strategy in, and turns out to be again, an erroneous reasoning and erroneous thinking. So again, that's the problem with people leading the world, and I think the bad thing about it is that a lot of leaders will learn the wrong lessons. That it's now the time to accumulate power. Now it's the time to invest more in military strategy. But that puts the world on a very dangerous course, because you will have conflicts that spiral out of control and they'll destroy everything. So that's the worry. About nationalism, very quickly, the important thing about nationalism is, when does it work? What are the conditions under which nationalism works? I think that's the part that we need to understand. So American nationalism was very high when they invaded Afghanistan in 2001.
But it did not work in 2003, where the American public was questioning whether invading Iraq was the right thing to do, given that Iraq does not pose a threat to the US. Maybe Afghanistan does. And the same sentiment resonates with the American public, with the European public, with global public opinion today. So American nationalism, in this sense, of waging wars to guarantee or incentivize popular domestic support, it's not worked in Iraq, not worked with Iran. The reason why nationalism works in Iran, and that's the initial part where I wanted to say, is nationalism works best when it is framed in the form of a grievance, as in existentialist struggle, as a form of sacrifice. And you have all of that ingredients ingrained in Iran now. And that is why their strategy of countering the Americans has been more resolved and more resilient. So American nationalism, I think, despite Trump's attempts to, aggravate it, it's not working. His popularity ratings, I was reading yesterday, they are at their lowest now. I think it's around 32-33%. And look at what has happened to the regime in Iran, where you had large-scale protests in January. Hundreds and thousands of people came out protesting against the regime. But now there are hundreds and thousands of people who are coming out and celebrating the Iranian regime. So it has had the opposite effect. It has reinforced Iranian nationalism. So I think this is how it works. Thank you so much. And now moving to question and answer session. Since we don't have much time, I'll take 2 or 3 questions at most, and then we'll ask our panelists. So I'll take all questions, and then the one at the back. Assalamu alaikum, Mohammed Sayer here. I'm a student of International Relations in the 8th semester. میرا ایک سوال ہے، سر نے کچھ کامنٹس کیے تھے کہ اسپیشلی ریگارڈنگ دا گلف اسٹیٹس، کہ گلف اسٹیٹس نے کبھی بھی اسرائیل کو کنڈیم نہیں کیا آؤٹ رائٹلی، امریکہ کو کنڈیم نہیں کیا، ایران کو کنڈیم نہیں کیا. وائی ڈو وی سم ٹائمز فارگیٹ کہ یہ دنیا کلاسیکل اسٹیٹ نیشن اسٹیٹ بیہیویئر کے اوپر چلتی ہے، اینڈ وائی ڈو وی فارگیٹ سم ٹائمز کہ ہسٹری آلسو پلیز اے رول ان ہاؤ اسٹیٹس ریئیکٹ. فار ایگزامپل، جب عرب اسٹیٹس مل کے اسرائیل کے خلاف وار لڑ رہے تھے، سیریا ساتھ میں ملا ہوا تھا، ایجپٹ ملا ہوا تھا، تب ایران کدھر تھا؟ اور تب ایران کی جو کلرجی کلاس ہے جو آج پاور میں، وہ کدھر تھی؟ سیریا کے اندر جب رشیا کو بیسز ایران دے رہا تھا، تب ایران کیا کر رہا تھا؟ اور اسی طریقے سے اگر آج یہ لوگ ایران کو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں، ایران نے ان کو کیا دیا ہے؟ اف ناٹ یو ایس، تو پھر کون سا پیراٹس استعمال کرتا اپنی سیکیورٹی کے لیے اسٹیٹ؟ کیا یہ لوگ رشیا کے پاس جاتے یا چائنا کے پاس؟ اور آبویسلی ناٹ انٹرونشنسٹ. تو ایران کیا ان کو ڈھکیلتا یا ایران ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا؟ ایوری اسٹیٹ از لوکنگ آؤٹ فار دیم سیلوز. ہاؤ کین وی ناٹ کنسیڈر اٹ؟ Thank you. Next question. Yeah, go ahead. My question is about all panelists. Sir, that you are just mentioned that the جنگل کا قانون ہے، none of the power or our responsibilities. تو یہ تو جنگل کا ایسا ہو جائے گا جس کی جو مرضی آئے گی وہ کرے گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو دنیا میں ایک بہت ہی عظیم یا تو امن ہو جائے گا یا آدھی دنیا تباہ ہو جائے گی، یا پھر جو ہے کس طریقے سے آپ فیوچر دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان کے حوالے سے کیا ہوگا؟ کیونکہ پاکستان تو ابھی تو پاکستان کی گڈی چڑھی ہوئی ہے. صحیح ہے، اچھی بات ہے. The girl at the back. Hello. I think at the start, Dr. Fiza asked, what are your guys' thoughts on, the post-Cold War world order, right? And I can't remember, I think it's one of the first 2 speakers. One of you said that you don't see the political economy of the world changing, right? You feel like the world is going to continue being very hyper-capitalistic, right? So my question is, do you think that, for example, let's take Zoran Mamdani, right? He's a very mainstream political figure, and he presents himself as a democratic socialist. And he has built such a strong following, not just in the US, but all around the world. And, people are now kind of rising against, the Epstein class, as they like to call it now. Do you think that because he's such a mainstream figure, do you think it would inspire
like other political leaders, not just in the US, but all around the world, do you think they'd be inspired to maybe adopt a more, like a socialist economy? That's the question. I think that's answered. जी, वो आपका जो ईरान और अरब का सवाल था, आई थिंक यू आर मिसरीडिंग हिस्ट्री एंड फैक्ट्स. Iran has always opposed Israel and always supported Palestinian causes. Palestinians are Arabs. It has been in the forefront of support, which Arab countries have not been. These are the facts. This is history. So you can't turn facts around to say Iran ne kya kiya. Iran has been steadfast in its opposition. It is Arabs who have sold out again and again. Jordan is a client state of Israel. Egypt is a client state of Israel. UAE has now become a client state of Israel. So, और इनको अगर था कि ये अपनी सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि किसी और से मांगनी होती है. सिक्योरिटी तो आप खुद क्रिएट करते हैं. It is these Arab states who gave bases to the Americans, knowing that the Americans are setting up bases to counter Iran. So you set up the confrontation in the first place. So you have to pay the price for it. अगर आपने एक रीजनल सिक्योरिटी ऑर्डर बनाते जिसमें ईरान भी शामिल था, तो फिर आपको कोई हथियार की ज़रूरत ना पड़ती और किसी और की ज़रूरत ना पड़ती. तो ये दीज आर क्लाइंट स्टेट्स, और इनकी जो हुकूमतें हैं, बादशाहत जो हैं, ये अपनी बादशाहत को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका कोई नेशनल, विच दे डिफाइन एज नेशनल इंटरेस्ट. बीबी, आपका जो सवाल था, एक्चुअली वी हैव not properly defined the liberal order. We've assumed that it is the capitalist order. So liberal order का opposite socialist है. That's not the case. Socialism तो नहीं आ रहा है कहीं भी, और कोई भी promote नहीं कर रहा, चाइना भी नहीं कर रहा. Although ये सही कहा कि Chinese economy is essentially socialist. Even today, जो Chinese companies हैं, 80% of Chinese companies are state-owned companies. ये जितनी Chinese companies बाहर भी जाके काम करती हैं, हमारे यहाँ भी करती है, सारी state-owned companies हैं. Private sector वहाँ नहीं है. So China is essentially a socialist economy. They have turned it into a market socialism. That socialist economy is using market principles. That's the change they have done. But it's still a state-run economy. लिबरल और वर्सेस इलिबरल का मतलब ये है जो बेसिकली ह्यूमन राइट्स और राइट्स ऑफ वेमेन एंड डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो है जो हंगेरी का विक्टर ऑर्बन रिप्रेजेंट कर रहा था, द इलिबरल डेमोक्रेसी. सो दैट इज द थिंग वेयर देयर आई थिंक यस, लिबरल डेमोक्रेसी हैज टेकन अ हिट एंड विल कंटिन्यू टू टेक अ हिट बिकॉज उसके चैंपियंस नहीं रहे. अब यूएस और वेस्ट थोड़ा बहुत तो चैंपियन थे. मतलब जीएसपी प्लस पाकिस्तान को मिला है, जिससे हम एक्सपोर्ट हमारी थोड़ी बढ़ी है. उसके कुछ कंडीशंस हैं कि लेबर राइट्स होंगे, लेबर कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस बेहतर होंगे. ये सारी चीज़ें वो सब गायब हो जाएगी. अब नहीं रहेगा. सो आई थिंक दैट चेंज इज सर्टनली कमिंग. दी internally, every country inequality will rise. हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा और बढ़ेगा. जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी हम फेस कर रहे हैं, ये सिर्फ क्राइसिस को कंपाउंड कर रहा है. ये क्राइसिस पिछले 20 साल से है हमारे यहाँ. we don't have enough to repay our loans, so we are taking loans to repay loans. This we are doing for the last 20 years. We are a bankrupt country for the last 20 years. Bankruptcy की definition ही है कि मैं कर्जा लेके वापस न कर सकूँ तो मैं bankrupt हूँ. Pakistan is a bankrupt country for last 20 years. अब जाके हमारा जो foreign exchange का crisis gap बढ़ गया, तो crisis ज़्यादा acute हो गया है. लेकिन ये crisis पहले भी था. हम कभी सऊदी अरब से कहते थे, यूएई से कहते थे, चाइना से कहते थे कि आप अपने 2-4 अरब डॉलर हमारे पास डिपॉजिट कर दें ताकि हमारा
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा नज़र आए. It was just optics. They were keeping their money with us with no authority to use that money. So it was just optics. That's how we've been operating. वो UAE ने तो अपने पैसे वापस ले लिए. UAE में सऊदी अरब के पास भी अब गुंजाइश नहीं होगी इस तरह से पैसे रखने की. They are all going, in the short run, they are all going to be in a financial crisis. So पाकिस्तान और क्या बेचेगा? हमें जब पैसे चाहिए होते हैं हम अपनी को सियासी खुद मुख्तारी बेच देते हैं. तो देखते हैं अब क्या बेचते हैं वो. लोग कहते हैं कि हमारी स्टॉक बड़ा हाई है. वी आर पाकिस्तान इज बीइंग सीन एज अ पीस मेकर इन द वर्ल्ड एंड ऑल दैट. तो मुझे अक्सर ये मीडिया वाले भी पूछते हैं पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा. लेकिन यही फ़ायदा होगा कि कुछ कर्जे और मिल जाएंगे. इसके अलावा हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं? हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते चूँकि हमारी इंडस्ट्री बैठ गई है. वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग. कुछ बनाएंगे तो बेचेंगे ना. So Pakistan has to really completely reorient its economy from scratch. तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, अब तक जिस तरह 40 साल से ये मुल्क को चला रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा. और अगर इसी तरह चलाना चाहा तो ये collapse कर जाएगा. We are heading for a collapse. I mean, Huma is warning of a third world war. Before the third world war happens, I am afraid that this country will collapse. एक अभी कैसे से अब मैं पोडियम पे झगड़ा होएगा. No, all I'm saying is कि देखिए पाकिस्तान ने इस वक्त पाकिस्तान हैज प्लेस्ड इटसेल्फ करेक्टली. लेकिन वो जो एक बच्चे ने सवाल पूछा था ना कि ईरान ने किसी के लिए क्या किया है. ईरान ने आज दोबारा जिंदा किया है गजा को. गजा तबाह था, गजा ख़त्म था. और आप इब्राहिम एकॉर्ड्स पर साइन करते, गल्फ स्टेट साइन करती, सऊदी अरब साइन करता, और जब सऊदी अरब साइन करता तो पाकिस्तान साइन करता. वी वुड हैव रिकग्नाइज्ड इजराइल, राइट इट डाउन. इट वाज हैपनिंग. 7 अक्टूबर गजा में किसी ने अपना खून, गजा ने तो लिटरली अपना खून देकर पैलेस्टीनियन कॉज को रिवाइव किया है. और फिर उसको ईरान ने दोबारा जिंदा किया है. कोई नहीं खड़ा हुआ था मुस्लिम वर्ल्ड में, कोई नहीं खड़ा हुआ था यूरोपियन वर्ल्ड में टू रिवाइव द कॉज ऑफ द पैलेस्टीनियंस. और आप में से क्यों लगता है कि ये पैलेस्टाइन पे रुक जाता? ये तो नहीं पैलेस्टाइन पे, वो तो आज खुले बंदों ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे. वो तो आज खुले बंदों एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के बाद सुन्नी रेडिकलिज्म की बात कर रहे हैं. आपको क्या ख्याल है कि उनको पाकिस्तान बर्दाश्त है, उनको तुर्किया बर्दाश्त है? उनको नहीं बर्दाश्त है भाई, जब तक we don't hit back. And Iran has done that for. I'm not in favor of what happens inside Iran. I think some of the things the Iranian regime does is as bad as the Afghani regimes. But वहाँ पर 98% literacy rate है. वहाँ की औरत 90% पढ़ी लिखी है. ये ईरान की हकीकत है. मैं और आप अगर अपना लें तो हमारी जिंदगियां बदल जाएं. वहाँ पे इस वक्त उनका एक डेटा सेंटर है जो विमेन साइंटिस्ट रन करती हैं. सारा ये उनका वॉर सेंटर विमेन साइंटिस्ट रन कर रही हैं. सो ईरान इज अ सिविलाइजेशन एंड यूएस ट्राइड टू डिस्ट्रॉय दैट. और उनके गले पड़ गया, बात हुई, ये याद रखना, गले पड़ गया ईरान उनके. दैट इज गोइंग टू चेंज द ऑर्डर. द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग बिकॉज वी आर विटनेसिंग हिस्ट्री. इट इज हैपनिंग नाउ. सॉरी गॉड. ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को साउथ एशिया के ब्लॉक से निकालकर मिडिल ईस्ट के ब्लॉक में ले जाया गया है, उसके क्या रीजंस हैं या इसका कोई फ़ायदा भी होगा पाकिस्तान को? ये हकीकत में तो नहीं गया है. कुछ पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिस्ट माइंडेड है, ये उनका पुराना ख्वाब था कि पाकिस्तान को साउथ एशिया में ना दिखाओ, हमें मिडल ईस्ट में दिखाओ. बट इन ऑल रियलिटी पाकिस्तान रिमेन्स इन साउथ एशिया एंड Pakistan actually strides both sides. You know, the Punjab and Sindh are very much South Asian. हमारे कपड़े, खाने, ज़बान, हर चीज़ उसके साथ है. जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है वो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के करीब है कल्चरली. So we are on both sides. Politically we are part of South Asia and no one in Middle East is willing to accept Pakistan
as a Middle Eastern country. یہ تو Thank you, sir. پیچھے 2-3 لڑکیوں نے ہاتھ اٹھایا تھا. I think. So we will continue this during the tea break, and I think Thank you to our esteemed panelists for a very engaging and thought-provoking discussion. We would now like to invite President Zabist, Madam Shahnaz Wazir Ali, Vice President Academics, Professor Dr. Muhammad Altaf Makati, Vice President Admin and HR, Mr. Imtiaz Qazi, to kindly proceed to the stage and present the token of appreciation to our respected guests and panelists. Dr. Kaisar Bengali. Dr. Huma Bakai. Dr. Farhan Hanif Siddiqui. And Dr. Tausif Ahmed Khan. Kindly stay on the stage for a group photo. The faculty of IR is kindly requested to come up on stage for the group photo. IR faculty, Dr. Muhammad Umair and Mr. Imran Alam. Thank you so much. Thank you for having me. Thanks a lot. हमारे पे ना कल इवेंट था मेरे और